So we are going to start our maths class. Now you have already done question number 1 to 4 and 6 of exercise 2b. Question number 5 we have not done. Okay, so we'll be doing question number 5. Now after watching this video 2 to 3 times, you have to copy all the questions in your register. Okay, now the question number 5 has 5 parts. So we are going to start with the first part, that is A part, and it says that the difference of the place value of the two 8s in 3688. So you have to calculate the difference of the place value of two 8. Now in mathematics there are certain terms used for subtraction, addition, multiplication. Okay, so difference here means subtraction. Okay, difference here means subtraction. Now what you will be doing, will be calculating the place value of both the 8. So the number is 3688. So for place value of first 8 is place value of first 8 means this one. Okay, so the place value of first 8 is 8, and I told you whenever you are calculating the place value, you'll write down the number whatever it is given and the next digit will become 0. The place value of the first 8 is 80. Similarly for the second 8 it will be 8. Okay, so we have written here the place value of first 8 and the second 8. Okay, now difference means subtraction. So the difference between both of them, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है. ठीक है, so we'll subtract. Now you know that whenever we are subtracting, we'll be subtracting smaller number with the larger number. तो large number आपका कौन सा है 80. 80 में से हम क्या माइनस करेंगे 8. So write down 80, and then when you will be writing 8, now 80 was having 2 digit and 88 is having only 1 digit. So whenever the second number is having only 1 digit, you will be writing from the back side. Okay, so you have written it. Now subtract it. So 0 minus 8 is possible? No. So what you will be doing, you will be borrowing from this 8. So this one will become 10, and what this has become, क्योंकि इससे आपने 1 ले लिया है तो ये कितना बच जाएगा 7. Now we can subtract. So 10 minus 8 will be 2. 7, now there is nothing below the 7, so that will be 7. 7 minus 0, यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे मतलब क्या होता है 0. So 7 minus 0 will be 7. So the answer is 72. Therefore the difference between the place value of both is 72. Now the next question, that is B part. B part says, what is the product of the place value? What is the product of the place value of 3? आपको product find करना है with the place value of 3 in this and its face value. आपको दो चीज़ों का product find करना है, 3 की place value का और 3 की face value का. So first of all we'll calculate the place value of 3. So place value of 3 will be 3, and I told you कि उसके बाद का digit क्या बन जाता है 0. ऐसे ही आपको फेस वैल्यू अगर 3 की निकालनी होगी तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, मैंने क्या बताया था 3 की, जब भी आप किसी भी नंबर की फेस वैल्यू निकालते हैं तो वो कभी भी चेंज नहीं होती है. 3 की फेस वैल्यू क्या होगी 3. अब प्लेस वैल्यू क्या आई थी 30 और फेस वैल्यू क्या आई है 3. हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. Product means multiplication. So we will write down the place value of 3 in this is 30. Face value of 3 in this is 3. Now product of the place value and the face value will be equal to 30 multiplied by 3, which is, now we'll be multiplying. So 30 write down here, then put the multiplication sign and write down 3 here. Now read the table. 3 zeros are 0.
Now the product of the place value and the face value, that is 90. The product of the place value and the face value is 90. So the next question is C part, that is the quotient when the place value of 6 in this is divided by its face value. When the question, what will be the quotient when the place value of 6 in this is divided by its face value? So first of all, we'll calculate the place value of 6. So place value of 6 will be 6. Then we'll be calculating the face value of 6, so it will be also 6. Now they are asking quotient. Quotient कैसे निकालते हैं? Quotient means here division. So we have to divide the place value of 6 with the face value of 6. So it will be 6 divided by 6, which is, now when you will divide 6 divided by 6, so inside also it will be 6, outside also it will be 6. Then read the table of 6. ठीक है, 6 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार में 6 जाएगा, कितनी बार में टेबल 6 की टेबल में 6 आता है, 1 times 6. So write down 1 here and write down 6 here. Now 6 minus 6 will be 0. So what is the quotient here? 1. So what is the quotient here? 1. So next part is the product of the place value of 5 in 1253 and the face value of 9 in this. तो वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट. हमने पहले भी बताया था प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस इज 50 एंड फेस वैल्यू ऑफ 9. फेस वैल्यू ऑफ 9, इसमें फेस वैल्यू 9 की क्या होगी, 9 मैंने बताया था ना, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, तो इसमें फेस वैल्यू क्या आ गई, 9. सो राइट डाउन प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस इज 50, फेस वैल्यू ऑफ 9 in this is 9, प्रोडक्ट ऑफ बोथ. अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 9. नाउ रीड द टेबल ऑफ 9. 9 zeros are 0, 9 5s are 45. So the product of the place value and the face value is 450. Next one is E part, the number that comes just after the greatest 4-digit number. ठीक है, एक ऐसा नंबर आपको बताना है जो ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर के बाद में आएगा. ठीक है, तो पहले हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना होना चाहिए. अगर आपको 1 digit ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो 1 digit का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9, क्योंकि उसके बाद तो 10 आ जाता है. जो 10 जो होता है वो 2 digit नंबर होता है. देन 2 digit नंबर सबसे बड़ा कौन सा होता है, 99. 3 digit नंबर इज 9999. Similarly 4 digit number is 9999. So the greatest 4-digit number is 9999. The number that comes after it, जो नंबर इसके बाद आएगा, तो कोई भी बाद वाला नंबर हमें, सपोज मेरे पास एक नंबर है 2, इसके बाद क्या आएगा तो हम कैसे पता कर सकते हैं. अगर हम 2 में 1 को प्लस कर दें तो हमें पता चल जाएगा क्या आएगा, जो होगा 3. सिमिलरली ऐसे ही अगर 11 के बाद क्या आएगा, उसमें अगर हम 1 प्लस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 11 के बाद क्या आता है, 12. ऐसे ही अगर 9999 में हम 1 प्लस कर दें तो हमें पता चल जाएगा क्या आएगा, तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 9 + 1 विल बिकम 10. So we'll write down 0 here and 1 will go as a carry. Then 9 + 1 again it will become 10. So 0 and 1 will be carry. So 9 + 1 again it is 10. So write down 0 and carry 1. Now 9 + 1 again it is 10. Now इसके आगे कैरी देने के लिए तो कुछ है नहीं, तो हम पूरा 10 लिख देंगे. So the number is 10,000. Okay. So thank you class and complete your work.